Devam Pancacharnam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah Purnamidam Purnat Purnadachyate Purnamadaaya Purnamevavashishyate Shanti 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 Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti 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 रूपरेखा में पहले ये लोग गणपति को प्रेयर करेंगे, then they will sing 12th chapter of Geeta, and then they will play a little play, right? So ready? Okay. We'll start with the dance. The dance. Music, dance and music. Sia, you said just Sia no video. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि अर्जुनवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामृतम् ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च सन्नियन्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये च सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मम ध्यायन्ता उपासते तेषामहं समुदातः नित्यसंसारसागरः भवामि न चिरपात मया वेशितचेतसाम् मय्येवं मनात्वस्स मयि बुद्धिं निवेशय विवश्यस्यसि मय्येव अतः न संशय अथ चित्तं समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थितम् अभियासा योगिन ततो मामच्चत्तं नियन्त्रकेन चेत् अभ्यसेऽपि समार्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम् अभ्युपाससि
अतर्तेरपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मनः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानात् कर्मफलत्यागत्यागच्छन्तेरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखसुखसमः सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः Yasmano vijate loko, lokano vijate chaya, harshamashavayoddvegir, mukto yasacha me priya. अनापेक्षा सचिर्दक्ष उदासीनो गतागता सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः Yo na hishtati na dvesti, na shunchati na kamshati, shubha shubha parityagi, bhakti mamya same priya. समासत्रोच्चमितेच तथा मानपमानय शीतोष्णा सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिदास्तुर्मुनि सन्तुष्टो येन किञ्चित् अनिकेत भक्ति मामे प्रियो नरः एतदर्म्यमृतं इदं यक्तोकं परिपासते श्रद्धना मत्परम भक्तस्ते दिवं मे प्रिय Om Tasya Vidhi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Bhakti Yoga Nama Dvadasho Adhyayah. देवियों और सज्जनों, आप सबका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठी है सिया जी। आपका पहले प्रश्न है 10,000 रुपीस का। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches that all emotions, like happiness and sorrow, are temporary and should be tolerated with patience. This is symbolized by which natural phenomenon? आपके options are A. The rising and setting of the sun, B. The changing of the seasons, C. The flow of a river, or D. The growth of a tree. हाँ ये कंफ्यूजन है सर हाँ क्या confusion? सर देखिए रिवर तो फ्लो होता है और फ्लो होता ही रहता है और ट्री ग्रो होता है और ग्रो होता ही रहता है आई थिंक इन दोनों में से एक आंसर होगा सिया जी, ऐसे confusion में लोग lifeline लेते हैं। क्या आप lifeline लेना चाहेंगे? हाँ सर 50-50 लाइफ लेते हैं कंप्यूटर जी, सिया जी का 50-50 lifeline यूज करना ऑर्डर दिया जाए। दो option हटाए। अरे वाह, दोनों confusing answers तो चले गए। अब क्या करेंगे? सन तो गॉड है पर सन आंसर नहीं लग रहा लेकिन सन ही हो लेकिन नहीं सन नेचर है नहीं सन नेचर नहीं है आंसर ए लॉक किया जाए सर आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है ना? बहुत स्मार्ट हूँ तो फिर से जवाब बोलिए। ऑप्शन ए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए लॉक किया जाए। गलत जवाब। सही जवाब है आंसर बी, द चेंजिंग ऑफ द सीजन। जैसे सीजन बदलते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स भी बदलते रहते हैं। जैसे सीजन इम्परमानेंट है वैसे ही हमारे इमोशंस इम्परमानेंट भी है। सॉरी सिया जी, आप इस गेम से आउट हो चुके हो। सॉरी सिया चलिए अब हम एक छोटा से ब्रेक लेते हैं और कुछ बेटर और टीम कुछ बेटर कैंडिडेट ढूंढते रहेंगे। कंप्यूटर जी What are you guys doing? Playing video games. Every time, it's some destructive game or another. Bro, what world are you in? Did you know that video games can boost your concentration and wisdom? The wisdom you're getting from video games won't help you when life hits you in the face. I wish you could understand what real wisdom is. Geeta, but Geeta. Anyway, one day you'll understand. You just
few years later. Why does life have so many ups and downs? It's like happiness and sorrow are playing tag with each other, and I'm stuck in the middle. I was on top of the world when I got into a good college and had a great girlfriend, but then bam, breakup. Then I was in a good job, and now I'm drowning in work stress. Who can help guide me with the wisdom needed to overcome these difficulties? Yep. Oh yeah, everyone has problems. Remember what your mom always said? I wish you really knew what wisdom really is. Yeah, but she's not around to guide me through these problems anymore. She always said Geeta Pada. Maybe the answers are in the Geeta. Yeah, maybe it is. Let's dive into the Geeta adventure. If we want to learn more about the Geeta, we should go where it's used the most, right? Where is that? The Indian courtroom. Oh, you're right. Let's go on this Geeta adventure. Geeta, here we come. आपका फिर से स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे साथ हॉट सीट पर बैठी है रिया जी। आपका पहला प्रश्न है 10,000 रुपीस के लिए in the Bhagavad Gita, which principle or yoga from the Bhagavad Gita teaches that one should do their actions with dedication but without attachment to the fruits of their labor? Your options are A. Dhan Yoga, B. Karma Yoga, C. Kisan Yoga, or D. Downward Dog Yoga. सर मैं तो कभी योगा में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब ये कौन सा योगा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेनी चाहूँगी। बिल्कुल रिया जी, किसको फोन करने चाहेंगे आप? राहुल अंकल को। Ding 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 ding. Who's Ding 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 ding. Who's Ding disturbing me? ding ding ding. Who's disturbing me during my Netflix time? Hello. राहुल अंकल, आपकी दोस्त रिया यहाँ हॉट सीट पे बैठी है आप कौन हैं? और थोड़ी सी मुश्किल में है। उन्हें मदद चाहिए। Okay, sure. राहुल अंकल, स्क्रीन पर ऑप्शंस देखिए और बताएं रिलेटेड टू फ्रूट और अटैचमेंट। देखिए, whenever you are given options, you have to always think logically. You have to always go step by step. ठीक है? आप सीधा आंसर नहीं दे सकते। So आपका क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या है? Which principle or yoga from the Bhagavad Gita teaches that one should do duties with dedication but without attachment to the fruits of their labor? देखिए, इसमें जो कीवर्ड है वो फ्रूट है, ठीक है ना? तो फ्रूट तो फार्म में उगता है एंड फार्म तो फार्मर्स करते हैं फार्मिंग, तो मेरे हिसाब से किसान योग होना चाहिए। यस। सर ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। Okay, ये गलत जवाब है। सही आंसर है कर्म योगा। कर्म योगा सिखाता है कि एक्शंस पर ध्यान दे बिना आउटकम की चिंता किए। इससे आप रिजल्ट्स के टेंशन से मुक्त होते हैं और काम पर पूरी लगन से लगे रहते हैं। प्रिया जी, लगता है कि राहुल अंकल को किसान योगा की करने की जरूरत है। चलिए अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और रिया जी के लिए थोड़ा सा मेडिटेटिव म्यूजिक बजाते हैं। So she knows what yoga is. गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, जो बोलोगे सच के सिवाय कुछ नहीं बोलोगे। गीता गिरा दी। कितना बड़ा पाप किया। गीता गिरा दी। अये यो, तुमने गीता गिरा दिया? कितना बुरा किया। आप सब इतना गुस्सा क्यों है? एक किताब ही तो है। किताब? ये किताब नहीं, हमारे लिए भगवान है। चलो उठाओ और प्रणाम करो।
जज साहब, एक क्वेश्चन है तुम्हारा. ये कौन है लॉयर साहब, कहाँ से आया है? मुझे क्या पता। हम दोनों यूएस से आए हैं और हमारा एक क्वेश्चन है गीता के बारे में। हम तो हमेशा बाप की कसम खाते हैं, माँ की कसम खाते हैं और उनके कुछ नहीं हो जाए इनके डर से सच बोलते हैं। पर ये गीता का कसम क्यों? एक किताब की कसम से कोई सच बोलेगा क्या? अरे जुबान संभाल के बात करो, धर्म ग्रंथ है ये। ओए मामू, ये कहाँ से लफड़ा कर दिया? बाप का जूता खाने से कसम खाने से एक जन्म खराब होता है, पर गीता का जूता कसम खाने से हर जन्म खराब होता है। सच में मैं तो गया। Exactly. We want to know why people swear on the Geeta. भाई, उसमें गौरव वाली बातें हैं। कृष्णा भाई ने ध्यान दिया है। ये लॉयर साहब और जज साहब से पूछो, सब पता है। बाहर की गीता बहन पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, पर गीता का टाइम कहाँ से मिलेगा? जज से पूछो। अयो मेरे से मत पूछो, मुझको सब पूछोगे तो तुम लोग क्या करोगे? मैं जज हूँ, गीता का जज नहीं। मुझको यही पता है, गीता पढ़ने से आदमी बन जाते हैं। जो गीता समझ गए वो लाइफ समझ गए, फिर वो क्राइम नहीं करता। तो फिर गीता के कसम खाने से बजाय गीता को पढ़ने दीजिए, तो फिर वो क्राइम करेगा ही नहीं। हाँ, केस बंद करो और मुझे गीता पढ़ाओ। हाँ, केस बंद करो। अरे चुप, इस आदमी को निकालो, नेशनल टाइम खराब कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे साथ हाजीपुर बैठे हैं हिम्मत राम ठाकुर जी। हेमा जी, आपके लिए पहला प्रश्न है 10,000 रुपीज का। The Bhagavad Gita teaches that the cause of suffering and delusion in human life is due to attachment and ignorance. In this sentence, ignorance is of what? Your options are A. Building a rocket, B. Making lots of money, C. Knowing one's true self and reality, or D. Being the best of the best. मैं तो बेस्ट हूँ, कोई मुझसे बेटर नहीं है। अमित जी, आपको पता है मैं मेन स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट था, टॉप स्टूडेंट। From the bottom? हाँ, आपको कैसे पता? सब मुझे फॉलो करते थे। मैं आगे, लोग पीछे, मैं आगे, लोग पीछे, लाइन लग जाती थी। तुम तो बड़े महान हो हमसे। आप चलिए, प्रश्न का जवाब आपको। मेरे पास सब कुछ है, पैसे, बुद्धि और शक्ति। आपको कौन सी लगता है स्टैंडर्ड? हाँ? ऑडियंस को। ऑडियंस, हिम्मत जी की आपकी मदद चाहिए। प्लीज हेल्प। Audience, what option do you vote for? Option A. Risha, what option do you vote for? Option B. Sora, what option do you vote for? Option C. Karan, what option do you vote for? Option D. अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, सभी आंसर्स बराबर बॉक्स में है। अब क्या करेंगे हिम्मत जी? गई भैंस पानी में, सोचना पाएगा। देखो, जो लोग रॉकेट बनाते वो शायद कभी सफर नहीं करता होंगे, पर पैसे होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती होंगे, राइट? तो फिर सब अमीर लोग क्यों परेशान रहते हैं? हाँ, मैं तो बेस्ट हूँ एंड ऑप्शन डी में 2 बार बेस्ट आते, तो यही सही आंसर है। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी लॉक किया जाए। गलत जवाब हिम्मत जी। सही जवाब था C, knowing one's true self and reality. People identify as body-minded intellect, and that is ignorance. समझ आया हिम्मत जी? हाँ, सब पता है। तुमको नहीं आता, लगता है आपकी बेस्ट हो। Gita's the understanding of life, death, and everything in between. They take the oath of the Gita, so they never lie. You can't drop the Gita. If the Gita has this ultimate knowledge, tell me, why don't everybody have that ultimate knowledge? Yeah, people keep in their house for happiness, prosperity, and strength, but never read it. We need to find out why. What do you want to know about the Gita? Everything.
I want to know the way of life it teaches. I want to know how I can deal with life's ups and downs without being hurt emotionally, mentally, physically. And psychologically. That means everything. How can Geeta help with the favorite breakup? The Gita encourages to practice equanimity, detachment, steady wisdom, and understanding the importance of life. By cultivating these 4 things, it allows you to solve all of the challenges life throws at you. Oh, I didn't understand. Could you explain further? Yeah, so first, equanimity or samatva. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्ते कर्मणि. You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to your inaction. Equanimity helps you focus on doing your best without being attached to the outcome. Oh yeah, I remember when I did a hard project at work. And when it was time for the presentation, some people praised my work, while some people criticized it. If I practiced equanimity that day, I would remain calm and take both criticism and praise into stride. Exactly. Not overwhelmed by. And not overexcited by the praise or too upset by the criticism. Exactly. With equanimity, whether you get praise or criticism, you can maintain your inner peace and perform your duties with the same dedication. Second, on detachment or vairagya. मातस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद अगामापायिन नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत. O son of Kunti, the appearance and disappearance of happiness and distress are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. One must learn how to tolerate them without being disturbed. The Gita advises us to pursue detachment from life's dualities, such as happiness and sorrow and pleasure and pain, by understanding that they're just temporary and transient. One should tolerate these fluctuations without letting them affect your inner peace. Oh yeah, I remember one time I posted a picture on social media and I hoped to receive lots of likes and comments. But when the response was less than what I expected, I felt disappointed. At that time, I should have practiced detachment, which would have meant recognizing my self-worth and that it's not tied to external validation. Whether people like my post or not, I stay content with myself and my choices. Detachment allows you to have a sense of satisfaction without being influenced by outside perspectives. You can stay grounded without caring about others' opinions. Third, on steady wisdom or sthita prajna. Dukkeshvanudirnamana sukkeshu vigataspraha vitaraga bhaya krodha sitirdirmunirchyate. One whose mind is undisturbed in the midst of sorrow, who is free from the desire for pleasures, and who is devoid of attachment, fear, and anger is called a sage of steady wisdom. A person of steady wisdom or sthita prajna is one who is undisturbed in sorrow and doesn't crave happiness. They reach a state of equanimity by practicing self-discipline, detachment, and inner wisdom. Oh yeah, I remember. I was managing a team at work and suddenly a major project hit the snap. My client was upset and my team was stressed. Instead of panicking, I should have maintained steady wisdom by staying calm and analyzing the situation objectively. I should have guided my team to solve the problems instead of to come up with solutions instead of getting bogged down by the problem. And I should have communicated with the client to manage their expectations effectively. Steady wisdom allows you to approach challenges with a clear mind, making sound decisions under pressure. It also helps you lead, providing stability to those around you during difficult times. And fourth, understanding the impermanence of life. Vasansi jirna niyata vihaya navani gurnati naroparani tatta sharirani vihaya jirna nyanyani samyati navani dehi. As a person sheds
worn out garments and wears new ones. Likewise, at the time of death, the soul casts off its worn out body and enters a new one. Understanding the impermanence of the physical world, one can be detached from temporary objects. Oh yeah, I moved to a new city and I was feeling really lonely and homesick. Instead of getting caught up in these emotions, I should have reminded myself that it is impermanent and will change. Exactly. Understanding the impermanence of life allows one to move past any transitions or challenges that they face because they're temporary. Oh, my head is spinning. It's too much to comprehend. Yeah, that was great, but how do you handle relationship issues? In your personal relationships, one often finds like misunderstandings or disagreements. You can practice equanimity and detachment by listening to the other person's perspective without acting emotionally. You can also put your ego aside to help solve problems quicker. By also striving to be a person of steady wisdom and understanding the impermanence of life, you can maintain a balanced approach and know that any ups and downs that life throws at you are always going to be temporary. Oh, that makes sense, and it's easy to understand, but how can we practice it in life? Does anyone here play an instrument? Yes. How was your first day? Did you play perfectly? First day was crazy. I didn't understand how to hold it. So how did you get better? Practice. Exactly. So in the same way, you have to practice equanimity, detachment, steady wisdom, and understanding the importance of life too. Because when you keep practicing, that's when you get it. Yes. Practice every single day. Thank you everyone for coming and gracing us with your presence today. As we reflect on the teachings of the Bhagavad Gita, we realize, firstly, although it's not a manual for becoming a scientist, it provides us with a guide to find strength in every setback. Secondly, although it's not a blueprint for leadership, it still shows us how to inspire others when all hope is lost. Thirdly, although it doesn't guarantee us success, it still teaches us acceptance of outcomes with grace. And lastly, but not least, although it may not prevent hardships, it still offers us wisdom to remain balanced through everything. Thank you again. Bless them with more wisdom and more guidance. Krishnam Vande Jagadguru Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat